ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के स्टार्टिंग पार्किंग से आपको लेफ़्ट लेना है। ध्यान रखें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स का, लेफ़्ट इंडिकेटर का। नाउ यू स्टार्टेड। वही पार्किंग है, ये रोड था। डोंट गो इन द पार्किंग लेन्स, those are there just for the cars, not for your driving. So now we are going out of this complex. यहाँ से बाहर जा रहे हैं अपन। इस कॉम्प्लेक्स से बाहर जाते ही मेन सड़क जो आ रहा है उस पर राइट जाना है आपको। राइट जाना है मतलब यहाँ से राइट का इंडिकेटर दो, अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, अपनी मिरर चेक करो, और यहाँ लगाने के बाद ये देखो, ये क्राउन बाथ किचन है। यहाँ से आपने राइट लिया, ये सामने रेड लाइट दिखेगी, यहाँ से भी आपको राइट लेना है। ये जो सड़क है इसका नाम ये रहा, यहाँ से आपको राइट लेना है। आपने राइट लिया, और माइट भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर जो है लेन चेंज करने को बोल सकता है, लेफ्ट लो या राइट लो, वो आपको ध्यान रख के करना है। और यहाँ जाने के बाद ये पहली रेड लाइट है जो कि हम क्रॉस करने वाले हैं। आप देखोगे ये रेड लाइट, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है सेकेंड रेड लाइट, जहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, और ये देखो 401 पे हम यहाँ से लेफ़्ट में जा रहे हैं। ये 401 का हाईवे शुरू होता है यहाँ से। अब अभी ग्रीन हो रखी है तो हम मिडिल में ला के हमने गाड़ी को रोक लिया है। जैसे ही हमें पास मिलेगा या फिर हम इंतज़ार करेंगे ग्रीन लाइट को ऑरेंज में चेंज होने का। और जैसे ही ये होगा, ये आप देख सकते हो ये बोर्ड है, तो हम यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हैं। ये ऑरेंज हो गया है, अब हम चले जाएंगे। मौका लिया, लेफ़्ट में लिया, गाड़ी लेफ़्ट में लाने के बाद हम लेन चेंज करेंगे, राइट में जाएंगे। ये राइट लेन में मिला हमें जगह, हम चले गए। यहाँ पे ये रेलवे का है, लाइन है, तो आपको थोड़ा सा स्पीड कम रखना है और लेफ़्ट और राइट ध्यान देना है। लेफ़्ट और राइट, फिर आप गाड़ी आगे ले जा सकते हो। ये हम इस रोड में इंटर हुए हैं। यहाँ हमें टोटल ये पहली जो लाइट है इसे क्रॉस करना है। वी विल क्रॉस दिस लाइन। ये बोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ, ये बोर्ड, यहाँ से क्रॉस करना है। ये रेलवे का फिर से आया, थोड़ा धीरे करके लेफ्ट राइट ध्यान देने का। उसके बाद क्रॉस करना, स्पीड लिमिट आपको ध्यान देनी है। ये ग्रीन लाइट आया है, हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। ये पहली ग्रीन लाइट थी, दूसरी थी? ये दूसरी थी ना? ये दूसरी ग्रीन लाइट थी, हमने क्रॉस किया इसको। स्पीड का आपको ध्यान देना, इस पर 70 की मैक्सिमम स्पीड है। और हम इस 401 हाईवे पे हैं। ये बोर्ड इस पे आपको दिखेगा। और फिर जो ये रेड लाइट आ रही है, ये रोड देखो, ये रोड, हाँ, यहाँ से हमें राइट जाना है। हम यहाँ से राइट का इंडिकेटर दे रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, मिरर चेक किया, राइट के लिए लेन चेंज किया, और राइट, ये देखो विलो रोड है, ये विलो रोड है। यहाँ से हमने राइट लिया। इसमें लेन चेंज आपको इंटर कर रहे हो, जैसे ही घुसते हो आपको गली मोहल्ला शुरू होता है कि इसमें आपको राइट लेना है। ये पहला कट जो है, इसमें आपको राइट लेना है। इस छोटे से गली मोहल्ले का जो स्पीड लिमिट है ना, ये 40 का है। यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। सो इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में आप 40 से ऊपर नहीं ड्राइव करेंगे, वरना आप गए। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 40। प्लीज मेंटेन। आप स्ट्रेट जाओगे इस कॉलोनी में। काफ़ी नाइस नेबरहुड है ये, काफ़ी नाइस नेबरहुड, बिल्कुल क्वाइट प्लेस है। द पीपल हु लिव लाइक अ पीसफुल लाइफ, दिस इज अ राइट प्लेस फॉर देम। ये जो कॉलोनी है, इसको हम सीधे क्रॉस करते जाएंगे। राइट लेफ्ट नहीं लिया, हम चलते चले जा रहे हैं फिलहाल। अब हमारा एक स्टॉप साइन आने वाला है, यहाँ से हमें राइट जाना है। फिर से वही सेम फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। ये देखो, ये स्टॉप साइन है,
आपको मैं एक आइडिया के लिए देता हूँ। देखो ये यू हॉल है, तो यहाँ से हम राइट ले रहे हैं। राइट लिया, सामने ट्रांस लॉजिस्टिक था, यहाँ से हमने राइट लिया है। राइट लेने के बाद हम इस लेन पे हैं और यहाँ से हम फिर राइट जा रहे हैं पहले ही रेड लाइट से। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पहले ही रेड लाइट से हम यहाँ से राइट जा रहे हैं। अगेन यू हैव टू मर्ज योर लेन, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट by checking your blind spot and your mirrors, and once you get right time, just merge the car here. On this road, I will show you board as a landmark, so you can identify that you are on the right road. See, this was the board. This is the road name, Willow Road. We merge the lane into the left one, and from here, the first red light, the first intersection, we are going to take left. For identification, I can show you on this intersection we have Royal Bank, and then you can find one Sherwin-Williams paints board. See the Royal Bank and Sherwin-Williams paint board. On this intersection, you have to wait till the lights are giving you indication for the left turn signal, and once you get it, you have to go into the left. So we are waiting because right now it's red light. And here you can see the Sherwin-Williams board, Royal Bank board, and just right after Royal Bank you will see a gas station there, Circle gas station. And from there you have to take, see the circle one, and from there you will find a again intersection there. You have to take again left. So here, from here, left, and then again left. It is just right after this. It is not very hard route for G testing, but if you are aware about the routes and if you are doing practice again and again, you will be very confident for your test. Although see, this lane is clear, but we cannot go left because here we have written left turn signal, so we have to wait for the left turn signal. The identifications again I am letting you know, these are Royal Bank, Sherwin-Williams paint, and the gas station. See, we got the arrow here for the left turn. We are going into the left turn on the road. We just entered here, and in front of us we have again one intersection. From here we are taking again left. This is the petrol pump. For identification I'm showing you. One petrol pump is here, another Petro Canada pump is just right after this intersection. So both petrol pumps are here. One is here, one is there. You can see one is there. So from here we are taking the left. We are just waiting for the light to be green. Once it would be green, we will go into the middle. We will look for a clear road. See, like we got the arrow, left arrow. So it's good. We went here on this road, the speed limit is 50. You need to be very careful, not more than 50. 50 is the maximum. Is the maximum. Don't think that we are driving fast, although we are doing it, but the purpose is because we are in rush and we have to just record this route. So purpose is recording the route, not the showing ride speed. That's why we are doing it. But you have to maintain because you want to get your G license. So this is first intersection. The road name is Speedvale Avenue. We will be stopped here because right now it's red light.
So this was the first intersection here. We are waiting for red light to be green. This video might be a longer, but the reason is like again same. We are showing you the route. Speedvale Avenue. We crossed this intersection. Now the speed limit is 60. So you can drive maximum 60 on this road. Again, you are getting the railway line here, so speed you need to be slow and then give a look left and right to show your instructor or driving test person that you are aware about these concerns, that this is a railway route, so you need to be very careful about that. You are. Again, give a look for it, right and left a little bit. Maintain your speed for the 60. It's a very quite a nice day. It's a rainy day. And now we are going to have the second intersection. Here we have Comfort Inn Hotel just left into this intersection. The road name is Woodlawn Road. Right after this, second right in the first flight. So right after this intersection, which you can see Woodland, we have to go into the straight and then the first plaza lane. So here we are taking right. You need to be very careful about this because the car might be coming in front of you. So you are taking care of that. Now we are into the campus of again the driving test center. We are going to park our car at the same place from where we have started. Let's go there, drive slowly, take care of the cars coming in front of you or from the right and left. Show your awareness to your instructor. Here is the parking place for your driving test center. And we are going to park our car. See, we have parked it. This was the route, guys. This was the route. I hope you enjoyed the route. Now do the practice for here and get success in your G license. Have a good day. Thank you.